Hello, students. Good morning to you all. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, as you know कि हम सोशल साइंस में ड्रेनेज सिस्टम चैप्टर 15 कर रहे हैं और ये चैप्टर 15 का थर्ड पार्ट है दैट ऑल्सो अ लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ समझा. पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती है, हिमालयस रेंज क्या होती है, उसकी रिवर्स क्या होती है, किस तरह से उनके फ्लोज जाते हैं, सब कुछ हमने समझा. राइट. एंड लास्ट में हमने पेनिनसुलर रिवर में नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन कंप्लीट किया था. राइट. उसके बाद गोदावरी बेसिन, महानदी, कृष्णा बेसिन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. बट आपको स्टूडेंट्स पता ही है कि ये चैप्टर मैंने जैसे रीड भी किया है उस हिसाब से मैंने आपको उसकी वीडियोस भी दिखाई है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए प्रॉपरली. राइट. तो हमने इसी तरह से ये थर्ड वीडियो में इस तरह से ही जाएंगे. सो इफ वी टॉक अबाउट द तापी बेसिन, sorry that we has already done it, Godavari basin, this is the largest peninsular and the slopes of western ghats were nearer Nasik in Maharashtra at about 14 to 65 km long. It flowed to the east and meets the Bay of Bengal. It is the largest being among the peninsular river. About 50% of basin in Maharashtra, rest of Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. Many tributaries meet Godavari, among them Purna, Vardah, Prahita, Manjara, Venagana and Penganga are the major rivers. Godavari has a longer flow and a larger basin. It is also known as Ganga of South. So, गोदावरी को गंगा ऑफ साउथ भी बोलते हैं. अगर उनकी बेसिन की बात करें तो उनके 1465 किलोमीटर क्या है, लॉन्ग है. And its May, where it is meets to the east, it's Bay of Bengal. And it is about 50% of basin lies in Maharashtra and rest of Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. Now, if we talk about the Mahanadi, Mahanadi originates mountain area of Chhattisgarh. It flows Odisha and meets the Bay of Bengal. It's about 860 kilometer long. वो कितनी long है students? 860 kilometer long and has a basin spread in Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. Similarly, if we talk about the Krishna basin, it's originated from Mahabaleshwar in Maharashtra. It is about 1400 kilometer long. Krishna basin जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, महाबलेश्वर से. एंड वो कितनी लॉन्ग किलोमीटर है, तो 1400 किलोमीटर लॉन्ग है. तुंगभद्रा, क्योना, घाटप्रभा, मुशी, भीमा आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज. ये सारी इसकी क्या है, मेजर ट्रिब्यूटरीज है. एंड इट्स बेसिन एक्सटेंड महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. कावेरी बेसिन, वो अगर उसी की बात करें तो इट हैज़ एन ओरिजिनेटेड इन द ब्रह्मगिरी रेंज इन वेस्टर्न घाट्स इन 760 किलोमीटर्स लॉन्ग. अमरावती, भवानी, हेमवती, कालिनी एंड मेजर ट्रिब्यूटरीज. उसकी कौन सी मेजर ट्रिब्यूटरीज है, तो अमरावती, भवानी, हेमवती एंड कालिनी. It extends in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu and it's Bay of Bengal. स्टूडेंट्स आपको भी पता है, ये मैं रीड करती हूँ, उसके थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको समझाती हूँ, बट आप जब इसकी वीडियो देखते हैं तब आपको प्रॉपरली इसकी आइडिया आ ही जाती है. तो मैं जानबूझ के यहाँ पे इस तरह से रीड करके शॉर्ट पॉइंट समझाती हूँ, बट वीडियो थ्रू आप प्रॉपरली इसलिए समझते हो बिकॉज ड्रेनेज सिस्टम एंड क्लाइमेट चैप्टर है. जितना आप वीडियो थ्रू देखोगे उतना आपको बेटर समझ में आएगा बिकॉज ये कितनी लॉन्ग होती है, कितने किलोमीटर्स थ्रू मिलती है, ये सब आपको वीडियो थ्रू ज़्यादा बेटर पता चलता है. राइट. तो अभी हम इसके भी वीडियोस देखेंगे. ठीक है. So the rivers have a shorter flow. ये थोड़ा तापी रिवर से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपका थोड़ा रिकॉल हो जाए एंड कंटिन्यू विथ गोदावरी रिवर. ओके स्टूडेंट्स. Major rivers flowing westward have shorter course. Major rivers flowing west, Mati and Mahi or Mahi Sagar. Tapi is almost 724 kilometers long. Godavari Basin. This is the largest of the peninsular rivers.
It starts from the slopes of Western Ghats near Nasik in Maharashtra. It is about 1,465 kilometers long. It flows to the east and meets Bay of Bengal. It has the largest basin among the peninsular rivers. About 50% of its basin lies in Maharashtra, and the rest is in Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. Many tributaries meet Godavari. Among them, Purna, Vardha, Pranhita, Manjara, Vainganga, and Penganga are major rivers. Godavari has a longer flow and a large basin, so it is also known as Ganga of South. Mahanadi Basin. Mahanadi originates in the mountainous area of Chhattisgarh. It flows through Orissa and meets Bay of Bengal. It is about 860 kilometers long and has a basin spread in Chhattisgarh, Jharkhand, and Orissa. Krishna Basin. It originates near Mahabaleshwar in Maharashtra. It is about 1,400 kilometers long. Tungabhadra, Koyna, Ghatprabha, Musi, and Bhima are her major tributaries. Its basin extends in Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh. Kaveri Basin. It has its origin in the Brahmagiri range in Western Ghats and is about 760 kilometers long. Amravati, Bhavani, Hemvati, and Kalini are her major tributaries. Its basin extends in Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu. It meets the Bay of Bengal to the south of Kudalore in Tamil Nadu. There are other smaller rivers which flow eastwards and meet Bay of Bengal. These rivers include Damodar, Brahmani, Vaitarni, and Suvarnarekha. Like to know. Hydrosphere exists over about 71% on the Earth's surface. About 97% of it is saline water. Only 3% water is available as fresh water. 1/4 of its portion is in the form of ice. Lakes. There are many lakes in India. Freshwater lakes are found more in the Himalayan region. Most of the lakes contain water during rainy season. In Kashmir, glacial lakes are formed. A few lakes are formed due to wind, rivers, and human actions. In rivers having many meanders, oxbow lakes are formed. Sea tides have created lagoon lakes. Chilka, Koleru, and Pulikat are examples of this type of lakes. Sambhar Lake in Rajasthan is a saline lake and salt is produced from it. Himalaya has many freshwater lakes which are formed due to glacial action. Water was filled in the depressions which led to the formation of lakes. Beautiful lakes are formed here due to melting of snow. Wular Lake in Kashmir has a tectonic origin. Other freshwater lakes of this area are Dal, Bhimtal, Loktal, and Bada Pani. Importance of lakes. Lakes are useful to man in many ways. Some rivers have originated from lakes. In the regions which have more rain, more water can be accumulated in the lakes. The accumulated water can be utilized for irrigation and other purposes. The stored water can also be used during drought. Reservoirs and lakes formed due to dam are useful for generating hydel power. Few lakes enhance the natural beauty. Hence, such lakes have been developed as tourist spots. Lakes are also important for fishery and as tourist resorts. Economic importance of rivers. Rivers have remained most important during human history. Rivers are the natural resource of water. These are very much important for many human activities. It has satisfied basic need of man.
agriculture and industries have developed due to rivers. Ancient civilizations also flourished along rivers. Major cities have developed along the river banks. Example, Delhi, Kolkata, Ahmedabad, Bharuch, Surat, etc. River is considered to be the base for an agrarian country like India. In recent times, river water is utilized for drinking, irrigation, hydel power, and for navigation. River pollution. River water is used more in domestic activities, agriculture, and in industrial production. We know the river's Lokmata, consider it to be very holy, and yet we release industrial effluents in the rivers. The sewage water is dumped into the river near the city. Besides, we also throw solid waste in the river. As a result, the river water is polluted. Thus, water pollution increases due to industrialization and urbanization. Pollution of river water has become our national problem. Government is putting in special efforts to prevent river pollution. At this stage, public participation is equally expected along with the government's efforts. Measure water pollution. Rules to prevent water pollution should be implemented very strictly. Water purification projects must be implemented through National River Conservation Project. Strict rules should be formed to prevent industrial units from releasing industrial effluents in the rivers. Industrial units should filter harmful contents from the chemical effluents before releasing them in the river. In order to keep the river water clean, every citizen should take care not to mix up the domestic waste into the river. Like to know. NRCP, National River Conservation Project. National River Conservation Project was introduced at the second stage of Ganga River purification. सो स्टूडेंट्स, इसमें हमने गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, इन सब के बारे में तो पढ़ा ही पढ़ा, बट हमने लेक्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ लेक्स, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर, उसके बारे में भी पढ़ा. ये मैंने आपको कंटिन्यू इसलिए दिखा दी बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कि आपको भी पता है कि 97% ऑफ वाटर है वो सलाइन वाटर है. इट मीन्स द सी वाटर, राइट. एंड ओनली 3% वाटर जो है वो अवेलेबल है फ्रेश वाटर. और अब उसमें से प्रेजेंटली की बात करी जाए तो 3% वाटर भी नहीं रहा है, राइट, फ्रेश वाटर. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे वाटर को कंजर्व करना चाहिए. किसी भी तरह से हमें क्या करना चाहिए? तो हमें वाटर को किसी भी तरह क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए, राइट. हमने देखे हैं काफ़ी सारे हम प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, सेव वाटर, सेव ट्री. वाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स? बिकॉज अब पानी की कहीं ना कहीं फ्यूचर में कमी आने वाली है. और ये सब क्यों होता है? तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ये सारे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि वो हमारे एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज एरियाज़ को डेवलप तो करते ही हैं, पर उसकी वजह से हम और क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि उसको पॉल्यूटेड भी करते हैं. जैसे कि हमने गंगा नदी रिवर का देखा, हम उसको मानते हैं तो एज अ लोक मानता है, फिर उसको पूरा का पूरा जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह, वो सब नदी में ही निकलता है, जो कहीं ना कहीं हमारे फ्रेश वाटर को क्या कर रहा है? ख़राब कर रहा है. हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए? तो हमने वो भी पढ़ा कि हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन के लिए. तो हमें स्ट्रिक्टली सारे रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए. एवरी सिटीज़न, हर किसी का राइट है कि हमें प्रॉपरली सारा का सारा जो वाटर है वो प्रॉपरली क्लीन रखना चाहिए और वेस्ट करना नहीं चाहिए. NRCP, जिसके बारे में हमने पढ़ा, वो क्या था? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स है, जो गंगा में, गंगा नदी का ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हुआ है सेकेंड स्टेज ऑफ गंगा रिवर प्यूरिफिकेशन में, राइट. तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर जो है थोड़ा सा वीडियो एंड थोड़ा सा मेरा एक्सप्लेनेशन दोनों के साथ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा.
एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर 15 ड्रेनेज सिस्टम होता है कंप्लीट. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ क्लाइमेट. टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू.